यस। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी वॉच के ड्रामास। सो आई वुड से के ड्रामा जितने मैंने अभी तक देखे हैं, ठीक है, के ड्रामा शोज यू अ वेरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, विच इज बीइंग अनटच्ड फॉर नाउ। हम मे बी मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाकी सिनेमाज में रोमांस नहीं दिखाते, प्यार नहीं दिखाते, ओके, बट के ड्रामास एक वो जो दो जनों का आपस में बिना कोई जेलसी, बिना किसी वायलेंस के, how two people fall in love, है ना, they talk about culture. द प्रोसेस फील्स सो नेचुरल कि आपको ऐसा लगता है यार दिस कैन हैपन टू मी एज वेल बिकॉज इट्स सच अ नेचुरल थिंग कि आप दो लोग मिलते हो। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा वो एग्जैजुरेट कुछ कुछ ड्रामाज में होता है वे देयर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ टेंशन, ऑफिस प्रॉब्लम्स और एनीथिंग, बट दैट इज ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आप लोग मिलते हो, आप बात करते हो, यू गेट एंगेज, लाइक बीट एनिमीज टू लवर और फ्रेंड्स yes, टू लवर और वॉट yes, एवर द सिनेरियो डायनामिक्स इट इज। yes, बट काफी आई लाइक द होल द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ द थिंग, एंड इसमें रश नहीं होता। most important, जल्दबाजी नहीं है कि हाँ, बस ये करना है, बस ये even होगा। identifying, realizing you have feelings for the female lead yes, is like 4 5 6 episodes, no problem. हाँ, no problem at all. छठे या 8वें एपिसोड में हाथ पकड़ते हैं 10वें एपिसोड में कन्फेशन और किस हो जाता है। exactly. इफ यू आर लकी यू गेट अ किस, अदरवाइज इट्स जस्ट कन्फेशन। वो भी बहुत ऐसा लगता है भगवान खत्म किया इन्होंने It फाइनली। is so real, मतलब you would feel like कि हाँ ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आपने बोला जल्दबाजी नहीं है। एंड जैसे बहुत चीजें होती हैं, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने ऐसा देखा था कि यूजुअली जैसे कॉलेज में या स्कूल में जो एक मॉडर्न लड़की होगी उसकी तरफ सब अट्रैक्ट होंगे यस इन बिगनिंग, हाँ इन यस बिगनिंग। फिर एक जो लड़की होगी जो सूट पहनती होगी उसकी तरफ शुरू में नहीं होंगे, फिर एक हीरो आएगा, हाँ वो हीरो आकर के सूट वाली लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर वो जो मॉडर्न लड़की, जिसे हम सो कॉल्ड मॉडर्न, आई डोंट नो इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, अगेन प्लीज एनीवन डू नॉट गो ऑन माय वर्ड्स, understand what I'm trying to it's say. just a Keyword. a phrase we are saying because Yeah, typically उसी phrase से लोग बोल ले जाते हैं, तो बोल it's लेना easier for us to make you understand. एग्जैक्टली। तो वो मॉडर्न लड़की फिर एंड में सूट पहनने लग जाएगी, क्यों, यू नो, दिस टिपिकल सिनेरियो, टिपिकल माइंडसेट। के ड्रामा में ये सब चीजें नहीं होती है, दे आर हु दे आर। yes, they have accepted like ये person मुझे पसंद है, all her quirks and all her freaks are my thing. Yes. I don't mind. वो एकदम उसको गॉबल करके खाने का शौक है खूब, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पर्सन फॉल्स फॉर दैट, यार ऐसी मैंने कभी देखी नहीं हाँ, लड़की हाँ, कि इतना yeah, खा लेती है हाँ, exactly. मुझे तो इसी पे दिल आ गया। True, bhai. Have you watched that? I think like Emino is our favorite. Yes. So you must have watched The King. Protect her, she's the future queen. Exactly. That lady is a lady cop. Oh, the reason why I like that show is because she is such a fierce character. Yes. And क्योंकि K dramas में भी it's a new thing. अभी में recently it's coming up कि there are female leads who are courageous, Yes. who are strong. Yes. Which is a very what I would say, it's a very rare thing. Yes. It's starting मतलब पिछले 1 2 3 साल में मैंने काफी अच्छे राइज देखे लाइक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स का, बट देन दैट वाज द स्टार्ट फॉर मी लाइक द किंग। अमेजिंग कैरेक्टर, एंड बहुत संस्कारों के बारे में नहीं बताया जाता है, रियल चीजों के बारे में बताया जाता है। प्रेशर नहीं किया जाता है कि ऐसा तो होता ही है, नहीं। द गाय, इफ द गाय इज इंटरेस्टेड इन यू, he will follow anything or everything. yes, simple. And even goes for the girl also, not I'm only talking about boys. Even for the girls also, they would be like ठीक है मुझे ये अच्छा लगता है, अब जो खामियां है जैसा भी है, if he is not so social it's fine, if he is extremely social it's fine. yeah, so you do not explore. In our generation we call it exploration. you just embrace each other for who they are. yes. And they embrace themselves for who they are as well. Yes. Because उन्हें पता है कि मैं इस तरह से हूँ and the person is liking me. If they don't like me, it's their loss or something like that. Exactly. They are not going to change. कि मैं ऐसी हूँ. For example, the show I'm talking, that lady is a cop, senior cop. So not that कि उसने like protagonist से शादी करने के लिए अपना काम धंधा छोड़ दिया
and she is at home not doing anything, okay, because मुझे इसका ध्यान रखना है. एक तो ये ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही जना ध्यान रखेगा, the other person would not do anything, और मे बी वो दोनों आपस में ध्यान नहीं रखते हैं, they are just there for each other, not that कि हमें मुझे उनके लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है, नहीं, वो एक दूसरे के लिए, I would be honest, वो बहुत कुछ नहीं करते जितना हमारे यहाँ हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, इतना नहीं करते वो दूसरे के लिए. Yes, those are certain bare minimum things I feel. exactly. Listening to the other person, making efforts, even if someone is getting gift I think is a very thoughtful gesture. लोग उसको बहुत materialistic way में लेके जाते हैं, but I feel gift is a very thoughtful gesture because when you buy something for someone, you think of them कि यार ये ना अच्छा लग रहा है, ये उसको पसंद आएगा. Yes, that is you getting gift. Why you get gifts for your parents? Like you think ना ये मम्मी को अच्छा लगेगा, ये पापा को अच्छा लगेगा, तो you get it that way. Yes. Same goes for the siblings कि यार उसको ये पसंद है, जैसे मुझे पता है मेरे भाई को anime पसंद है, तो I'll see anything anime related, I'll be like यार ये ओम को शायद अच्छा लगेगा, तो I'll buy it. Right. I know Prithvi is into sports or maybe cricket, but मैं नहीं देख पाती, but then not I would judge him कि अरे क्या देखता रहता है, नहीं. Maybe he's interested in cars or whatsoever, but मेरा वो interest नहीं. But that doesn't mean कि नहीं तुझे इसमें interest कैसे आ सकता है, मेरे को तो नहीं. Not demeaning others' interests and areas. Exactly, because I know मेरे interest बहुत ज़्यादा vary करते हैं. So ये चीजें हमें कहीं ना कहीं उन शो से देखने को मिलती है. And then very cute little gestures, very cute little gestures that any girl would fall for. Not you like, blush when you are looking at them. So yes, आपके साथ नहीं हो रहा, but then you are looking at the screen and you see them doing this stuff and you also feel so happy, like bas. Yes. Have you seen that show Glory? Oh my god. Amazing. That lady, first of all, I would be very honest, उस लड़की को ना ऐसे दिखाया नहीं that she's a vamp, कि उसका ड्रेसअप वैम्प जैसा हो, उसकी आंखें वैम्प जैसी हो, नहीं. Timid, soft woman. एंड वो वैम्प भी नहीं है, वो अपने बचपन का रिवेंज ले रही है, ठीक है, बट उसको भी ऐसा नहीं दिखाया है कि वो शक्ल सी वैम्प है या शक्ल सी सारे वैम्प है. She is the heroine of her own life. Yes. And Glory, imagine a woman who is acting like a villain but is a hero of the show. The anti-hero things जो हमने देखी है, like बहुत movies में हमने देखी होगी, like for example धूम में था, धूम 2 में था. हाँ. So ऋतिक रोशन वगैरह जिनको पसंद थे, those were actually anti-heroes. Yeah. So they were not actually the heroes. Hero अभिषेक बच्चन था, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे. Okay, so I would come. And other thing जो मैंने देखी है, talking about food. Usually हमारे सिनेमा में क्या होता है कि हम फूड को इतनी वैल्यू नहीं देते कि हीरो बैठ के सच में खाना खा रहे हैं. या ऐसा हो जाता है फूड का भी सीन भी हो ना, तो इट हैपेंस लाइक कि खाना वाना रखा है, लोग आके बैठे बात करें एंड दे लीव, खाना अनटच्ड है. यस. एंड इट फील्स लाइक व्हाई आर यू वेस्टिंग फूड. सो have you heard of Bon Appetit, or maybe you must have watched it? And I have. We talked about it as well. Yes. Oh my god, that show, भाई उसमें पूरी कहानी is about कि वो शेफ है जो like main protagonist है, the actress, Michelin star chef. पूरी कहानी उसके ऊपर है, पूरे सारे एपिसोड, like the king, that is how he falls in love for her. And then Mangun Rock वाला जो किताब लिखा जाता है, yes, कि वो राजा ने ही लिखा था, भाई something different story. But the best part about it was the presentation of food actually. Yes. Historical चीजें, of course it was not the accurate history. Yeah, of course. It's fictionalized historical drama, but the thing I liked about it कि उसमें food के ऊपर काफी preference था, and it was food with science and history. Yes. क्योंकि food की भी आपको history पता चली, whatever she is making, the protagonist is making, she is explaining कि पहले के टाइम में कैसे होता था. एंड देन इसमें ऐसा होता है कि लाइक प्रेजेंट टाइम में एक लड़की होती है who is a Michelin star chef, and then she gets transported back to like the periodic drama, periodic time through some like again that is a drama. ऐसे mythological powers के थ्रू जो भी होता है, चली जाती है, प्यार ने उसको पीछे भेज दिया. So she started this whole thing
नहीं, सो शी वेंट बैक एंड वहाँ पे उसको वो उस राजा के मुख्य राज रसोइया बन जाती है। मुख्य राज रसोई, बिकॉज हमने ये शो हिंदी हिंदी में में देखा देखा था। था। यस, ऑफ कोर्स। हाँ शी knows Korean language by the way, but I हाँ, have बट like कभी कभार यू जस्ट गेट अ zero बिट clue लाइक कि कुछ चीजें in कभी your कभार, native हाँ, language. इन योर नेटिव Yes, सर्टन टर्मिनोलॉजीज जो उसमें कभी कभार यूज होती है ना, यू आर नॉट एबल टू कैच इट इन कोरियन इटसेल्फ, yeah. एंड अंडरस्टैंडिंग इट वेल हेल्प्स मी। तो हिंदी में मैंने इसलिए देखा था। Huh, and I think this is the reason that people watch K-drama, because एक्चुअली इट K-drama ओपन talks about. it opened doors for a lot of people who are not into कि मुझे कोरियन में नहीं देखना, but then Yes. whoever are watching it in Hindi are enjoying it. Absolutely. So anyone can enjoy it. जैसे हम movies English movies देखते, Chinese movies, Hindi we mein. grow up watching Chinese movies, we grow up Exactly. watching South Indian movies. Yes, in Hindi. In Yes. Hindi. So हम वो देखते हैं, and the important thing about that show is कि उसमें हम खाने के बारे में इतना ढंग से बताया गया है। अग्री, चलो वी आर वेजिटेरियंस या प्योर, बट स्टिल लाइक वी कुड कनेक्ट कि कैसे उसने इस स्पाइस से ये बनता है, इससे ये, और पूरा बनते हुए बताया है। और जो लाइक हर हीरो उसको चखते हैं एंड देन ही इज लाइक, ओ माय गॉड, दिस फूड इज सो अमेजिंग। भाई कहाँ गए ऐसे शोज? बिकॉज के ड्रामा टॉक्स अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड विच इज एक्चुअली लुक्स लाइक ह्यूमन, Yeah, नॉट कि and it's not खाना बनाया हो गया। exaggerated. Yes. Most of the time in other cinemas, in our cinema as well, मैंने ये चीज नोटिस करी, sometimes it's exaggerated a bit too much कि Yeah. कोई इमोशन है, someone is in love, तो वो love बहुत ज्यादा exaggerate हो जाता Yes, है। हाँ। Like we have seen tragic love stories, so it's like yeah, yeah. dramatized to a very big scale. Yes. So But like K-drama does have a different thing. yeah, they Yes. have a thing. One of the best thing about K-dramas that I like, that I've always shared with you as well, you have a lot of picks. मतलब जो genre आपको देखना है, Yes. जो type का show आपको देखना है, Yes. सब आपको मिलेगा K-dramas में. So if हाँ. you want to watch like about friendship, Yes. we have shows on friendship जिसमें सिर्फ दोस्तों के ऊपर पूरा focused है, Yes. and it's like a हाँ. slice of life and Yes. healing के ऊपर है. There's Then a show on divorces, divorce, yes, उसके ऊपर relationship भी and है. divorces, marriages, Marriages, every human concept. anything Which you want. you You will want feel to watch a relevant. good thriller or a good thrillers में जैसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग शोज होते हैं, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर करके, टैक्सी हाँ, ड्राइवर एक yes. अमेरिकन मूवी भी है, Hmm. उसका एक कोरियन मूवी भी है, Yeah. बट दिस इज अ डिफरेंट टैक्सी ड्राइवर, जिसमें कंसेप्ट इज लाइक कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो लोगों की हेल्प करता है. सो हाँ. whoever is going through some injustice in their life, ये बंदा जाके, ये बंदा और उसकी एक टीम होती है, वो मिलके उसको हेल्प करते हैं. See, like completely a different And genre. every episode is a हाँ. new case, तो वो Yes. अच्छा लगता है. Yes. Law shows, law dramas. Oh my god! Recently K-dramas. we watched Beyond the Words. Yes, Beyond the Oh Bar. my Oh my god. The and the most important thing that I liked, how they have showed the chemistry between the protagonist and like that the boss. female lead, the boss and the These female female lead. yes, है ना, ठीक है भाई, शानदार chemistry, but still they are not in a relationship. Yeah, you just know something is there, they know something is there, but Yes. it's their thing. We are here to solve cases. Yes. तो हम उस पे ध्यान देंगे. They are not showing it, so every show does not get converted into a love story कि हीरो हीरोइन का मिलना जरूरी है, नहीं है मिलना जरूरी, बिल्कुल भी नहीं है. It can like be a normal show जो, and they do not distract themselves from the theme of the show. If it is based on law, you won't see actor and actress like roaming around, being in love. The see, the thing is, the other genres do come in, but they are not the main genre. तो अगर तुम्हारा law के ऊपर है, it's serious law. Yeah. Love and all are there, but it's a part of the story. Yes. जैसे आपकी life में if you are a lawyer, ठीक है, you solve cases, Yeah. तो आपकी life में romance नहीं हो सकता. हो सकता है. तो that why it is there. It's like a part of their life, but it's not the main story. Yes. आपका काम, हमारा काम नहीं वो चीज देखना, या उनका काम नहीं वो चीज दिखाना. It's more about it's more about the cases. Whoever, वो एकदम, they're very true to the theme they have theme chosen. of the show. Yes. And like in this like today's world of online dating, and you know, like we know how social issues are right now, maybe hookups or Yes. whatever, and ऐसे में when a show
you know, shows a different area of love, different picture of Yes. love and togetherness, companionship, and most important, love is not always about loving someone. It's about It's- saying yes to love. Hmm. Not I am interested in you. No, but like I say yes to you Yes. for everything. हाँ, like different हाँ. जो आज के दुनिया में लोग परेशान हैं कि एक जने का 2 से चल रहा है, 2 का अलग-अलग कहीं से चल रहा है, even after marriages and everything. So the theme that they are showing, it's like very real. And most important, they show love after 30. Yes. Love is not young. This is a lot of times कि बहुत सारे shows में you will see that there are people who are in their 30s, even in their 40s, Yes. and they're finding love for the first Yes. time, and it's a nice cute story. Yes, absolutely. Like अगर हम hospital playlist देखें, Hospital playlist, so yes. all the 5 main protagonists जो 5 दोस्त होते हैं उसमें, they are in their 40s because वो अच्छे खासे मतलब level पे है, they are doctors and Yes. at a very nice position. So Yes. सब कर कर आके, so they're in their 40s and now they are falling in love. Yeah. And they're falling in love like the teenage love वाला भी आपको देखने को मिलता है. Yeah, getting flowers, Yeah. like doing the bare minimum for each other. Yeah. And this is what we can see in these shows. Not that you have to find love in your college or maybe in your early 20s. No, you can have it even after your 30s. So like just be open. Not कि ठीक है मेरा एक बार दिल टूट गया अब तो मैं किसी के पास जाऊंगा ही नहीं. नहीं बिल्कुल नहीं. Okay, so they show you the very brighter side of life, I believe, and that is why people like to watch. Like like my dad likes watching K-dramas, which is very. I think we also became friends. We became friends because of K-dramas. Yes, because like for so what happened? I was at the office and I was new, and she was already working there. So in one of the lunch timings, I thought, okay, since I was new, so I didn't know what to do, and I do not talk in first or second meeting. So I was just started my laptop and I was checking through a K-drama, and I think at that time मैं कौन सा show देख रही थी? Little Women. Oh my god, you remember. So I was seeing Little Women and I just opened it and I started watching. And then she came in and she was like, अरे ये तो K-drama देखती है. मतलब मैं इनसे बात कर सकती हूँ. So imagine how she judged me. Because I was watching K-drama, so she judged my intellect. Okay. I was like, she's watching K-drama and she's watching a very good K-drama on that. Like Yeah. इससे बात हो सकती है कि ये अच्छा show देख रही है. Yes, and that is how we became friends. Yes. Yeah. And like my dad watches K-drama. Actually, he was the first one to tell me that she watches K-drama as well. Like उन्होंने मुझे घर पे आके मेरे को बोलते हैं कि एक बार हमारे अभी ना एक न्यू जॉइनी है, वो लंच टाइम में ना K-drama देख रही थी. मतलब K-drama देख रही थी. तो मैं लेजिट अगले दिन लंच टाइम पे आई हूँ स्पेसिफिकली देखने के लिए कौन सा K-drama देख रही थी. ये वाला अब मैं बात कर सकती हूँ. ये मैंने देखा है. You can have friendship. People have friendship over coffee, over meetups. But we, like, our friendship began through K-drama. K-dramas. Because I was watching a K-drama and she thought, okay, I can talk to her. Yeah. So, like, you can have your again, one more thing, it's very rare to find people who are into K-drama. So, मेरे around बहुत कम लोग, मतलब मेरे डैड देखते K-drama, उसके अलावा I know 1 or 2 of my juniors who watch K-dramas. That's it. Yeah. So मेरे लिए it was a very interesting. अरे someone watches K-drama, so I wanted to know. I wanted to be like कि कुछ नहीं तो K-drama पे ही बात कर सकती हूँ at least कुछ भी जो कौन देखा. My friend Rajvi introduced me to K-drama. Oh. Yeah, currently she lives in Canada. So she introduced me to K-dramas. You know, you should watch them. And I think my first show was Limino only because she likes Limino. Yeah. So I had to like I think Limino. It was that Boys Over Flowers. No. The Mermaid wala show. Yes, that I forgot the name. Sea Blue Sea or something. Legend of the Blue Sea. Legend of the Blue Sea. Yes. Naam yaad hai. So she showed me that you can watch it. I think we were traveling somewhere. So she was seeing. I thought, okay, I should also see it. So then she introduced me to K-drama. That is why. So it's not. मतलब बहुत time नहीं हुआ है. I think it was in 2021. मैंने भी कोविड टाइम में ही चालू किया. So my YouTube suggested me some one show. My ID is Gangnam Beauty करके. So this True Beauty वाला hero, if you remember, उसी का पहला शो था.
Okay. So that was my first show, and मैंने उसको ऐसी recaps नहीं आते थे YouTube पे, तो मैंने उसमें देखा था. I liked it, I enjoyed it. Yeah. Then I looked it up, I got to know this is K-drama. Then I looked up for other K-dramas. तब मैंने फिर देखे थे Itaewon Class देखा. Itaewon Class, And yeah. the moment I started watching it, my dad was also intrigued कि क्या देख रही है ऐसा जो उसको अच्छा लग रहा है. So when he watched Itaewon Class and 2-3 other stuff with me, he enjoyed it as well. So Yes. मेरा और डैड का बहुत अच्छा बॉन्ड उसमें भी बना कि हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं, अच्छा आज अभी आजकल कौन सा नया के ड्रामा चल रहा है, तो मैं भी लाइक ये वाला अच्छा चल रहा है, ये वाला देख सकते हो. कभी कभार हम साथ में बैठ के के ड्रामा बिंज वॉच करते हैं, हम यही सब करते हैं कभी कभार. संडेज हमारे ऐसे निकल जाते हैं. फादर डॉटर थिंग. या हमारे घर में इट्स अ फन एक्टिविटी टू हैव, टू बी ऑनेस्ट. एक हॉबी हो गई, कॉमन हॉबी हो गई हमारी. Yeah, and like the families can sit together. Yeah, Yes. even my mom watches K-dramas. वो हिंदी में देखती है. So हम सब बैठ के अभी recent हमने Bon Appetit और Majesty ही हिंदी में देख रहे थे last जब मैं थी. Okay. So we were watching Bon Appetit and they were enjoying it. My mom enjoyed it. मैं I थी, पापा, loved भाई, this हम show. चारों बैठ के देख रहे थे. I'm not kidding. Sometimes I do skip. I do a lot of Yes. skips. ठीक है. But Bon Appetit, I was gaga. Oh, it was actually हर a very एक very nice one. like literally हर एक मैंने seconds देखे हैं उसके. The same way I also enjoyed Little Women. Yes, Little Women is also Because good show. and one more thing I have to say, chemistry. The chemistry in non-romantic K-dramas are the best one. आप Agreed. Little Women देखो भाई, everyone was so pissed off those two didn't get like a love Not at all. track or Yeah. anything. But both of I them like knew. you अगर कुछ भी नहीं. हाँ, exactly. But we don't have words. हाँ. But like But we anyone. loved that chemistry so much कि हम end तक ऐसे थे, एक spin off ही निकाल दिया डायरेक्टर. इसीलिए सब काफी लोग हमसे पूछते हैं कि why do you guys watch K-drama? And कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या देखते हुए K-drama ऐसे पता नहीं कैसे से. But if you see one of the highest, अगर Netflix वगैरह पे अगर आप देखो, a lot of these other Netflix पे तो आ ही रहा था, a lot of these other like Hotstar हो गया and Prime हो गया, they have started doing their own production values in K-dramas. They're investing in that because they know the reach has reached a lot. Yes. So basically, in all, we can say कि K-drama gives you a softer side, softer version of life, like how you can enjoy little things. For example, buying groceries together. Yeah. Very small. It just makes you feel very connected, and it makes you also realize कि maybe this is something you want. This is it something sets your you expectation. want. People say they set your expectation way too high, but I think that's basic expectation that anyone should have. कि बंदे को बोलना आना चाहिए ढंग से, चीजें याद रखनी चाहिए. That is, I think, basic side. Yes. ये तो शाहरुख खान भी करता था, please. तो K-drama क्या चीज है? Agreed. Well, yes. We grew up watching शाहरुख खान. हमारे तो realistic expectation थे ही नहीं कभी भी. कुछ होता है. नहीं, कुछ होता नहीं. K3G. Sorry, K3G. Yes, right. कुछ होता is not my good Shahrukh Khan film, but I would. K3G. Rahul Raichand is the perfect ultimate fictional, like वो होता है ना, fictional husband character. ऐसा चाहिए. So yeah, that is why we watch K-dramas. And even like if you want to share anything or want to write us back, you can write us. I would love that you could share your own recommendations of K-dramas. Yes. And if you want some recommendations on K-dramas, reach out to us. Yes. So yeah, at the end, like, share, subscribe, and follow us on Instagram. Under the name The Solution Room Jaipur. Yes. And you can follow us personally at mine is Ritu0320 and I go as Lo Mil Gayi. Yeah. Okay, so thank you. See you. Take care. Bye bye.